Very. Hello. Hi, everyone. Please feel free to drop your hellos and very warm welcome from my side. We'll start in 2 minutes. If anyone has any questions or anything, hi, Arsha. So, if you want to drop in that, what are you expecting from this session or anything? Hi, Kevin. Then it will just help me in framing this. Hi, Isha. Hi, Lokesh. Hi, Srinivas. Call me Bhuvnesh. We'll start in 1 minute. As soon as it is 6 p.m., we'll start at that. And thank you so much for coming early. And yeah, I'm very excited to be doing my first stream. And I want to thank you all for joining and the greater team for organizing this. And I hope this session would be helpful. And I'm very excited about it. Okay. So just before I begin, I have one question. Hi, Rajat. Uh, if anyone here has any issue with my use of Hindi and English interchangeably, please write in the chat box, and I'll take care of it. I'll be okay to use both Hindi and English simultaneously, but if anybody has any trouble understanding Hindi with that use, so please feel free. There's no problem with it. But anyway, so good evening, everyone. Thank you so much for joining and giving your precious time here. I will make sure that this would be worth it. Uh, so before I introduce myself, थोड़ा सा let's talk about कि ये topic है क्या. If this topic got you excited, or if this topic got you confused, it's good. You are in good hands that way. तो पहले हम बात करते हैं कि ये well-being, designing, contentment हम करना क्या चाह रहे हैं. So basically ये मेरी पहली stream है. And
from my experience, and as I would tell how it has been, uh, I wanted to do this to give you an overview around जो हमारी जैसे लाइफ होती है, जैसे लाइफ सिचुएशंस होती हैं, हम उनको हमारे एक्सपीरियंसेस के थ्रू नेविगेट करते हैं. जैसे लाइक इफ समबडी हैड सम काइंड ऑफ एक्सपीरियंस फ्रॉम देयर चाइल्डहुड, और जिस टाइप के वो एनवायरनमेंट में पले बड़े हैं, जिस टाइप के लोगों के वो आसपास पले बड़े हैं, जिस टाइप के उन्होंने सक्सेस या फेलियर्स देखे हैं, around that there a lot of their belief systems or their whatever they want to do or they do in future depends on that. तो क्या is there a kind of a possibility, मतलब कई कई बार ऐसा लगता भी है कि we are in a kind of a trap कि whatever I do I'm still there, like I'm ending up doing what I don't want to do, I want to move out. और इसी वजह से like this digital revolution that has been there, creator is part of it. YouTube पर there are a lot of content, there are so many influencers, so many content creators who help people to get out of that trap. Now where do I come into this picture? So मैं अपनी जर्नी के बारे में थोड़ा सा बताता हूँ, and then I'll tell you what we are going to do in this session. So I belong from Jaipur, and मेरी जो जर्नी है वो ऐसी रही है कि मैं बहुत ही खेलता कूदता था पहले बचपन में, जैसे हम सब करते हैं. मुझे कोई अंदाजा नहीं था लाइफ का कि आगे करना क्या है. जस्ट यूज्ड टू बी इन द मोमेंट. आई यूज्ड टू थिंक यार ये जो चल रहा है, आई यूज्ड टू प्ले क्रिकेट, आई यूज्ड टू डांस, आई यूज्ड टू डू अ लॉट ऑफ ड्रामेटिक्स, एंड आई एम टॉकिंग अबाउट 9th and 10th. And at that point of time life was so good, and suddenly 11th 12th वाले टाइम पर एकदम से आया कि तुम्हें चूज करना है, you have to choose between engineering, medical, commerce, and suddenly my group of friends, my peers were preparing for JEE, and I also started preparing for that कि चलो ऐसे करते हैं, because I was clueless कि आगे actually as such क्या करना है. And I started doing it. I did not pass through in my first attempt, then I did the second attempt, then I got into IIT Delhi, and again from there on again I depended on my peers कि यार चलो जैसा भी है इधर से करते हैं, because it was कि एक बार तुम इधर आ गए हो तो life set है, you'll get a good job, you'll get good money, and then you'll have a good life. So मेरी जो imagination है, जो मेरा baseline था, वो baseline था कि okay, जैसा मैं स्कूल में था या जैसा मैं बचपन में था, वो जो सेंस ऑफ जॉय, जो सेंस ऑफ एंजॉयमेंट जो होता था, वो वाला मिल जाए. अभी ये कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज आई हैव टू कंप्लीट, आई हैव टू डू. एक बार वो जब मिल जाएगा तब ठीक है, शायद हो जाएगा. दैट्स व्हाट माय शेयर्ड एक्सपीरियंसेस और माय सोसाइटी और इन द एनवायरनमेंट दैट आई वाज लिविंग इन, दैट्स व्हाट दैट कॉमन बिलीफ वाज देयर. आई डिड इट. एंड अभी अगर मैं करेंटली बात करूं तो आई हैव एक्सपीरियंस ऑफ 8 years. आई हैव बीन इन स्टार्टअप इंडस्ट्री फॉर लास्ट 8 years, and I have tried a lot of things, and what over the time what I realized is कि मैंने college join किया, chemical engineering किया, I did not pursue it. I joined OYO rooms after it when they were very early. Then I did not continue with them after 1 year. Then I started my own company, ran it for 3 years. It failed. It had a lot of good experiences. I did not continue with it. Then I joined another company, and somehow, so कहीं ना कहीं, I'm not here to talk about my list of successes or failures. What I'm trying to give you is a context about कि आज हम करने क्या वाले हैं. तो ओवरऑल हो क्या रहा था, जो मैं रियलाइज कर रहा था जब I was contemplating on all this, कि यार I am trying to live a life which has not been designed by me. मैंने नहीं किए डिजाइन. ये जो डिजाइन है, एंड आई डोंट हैव एनी, मेरे को किसी से कोई गिले शिकवे नहीं है कि यार तुम लोगों ने मेरी लाइफ डिजाइन कर दी. यू डिजाइन माय लाइफ एंड आई वाज लिविंग इट फॉर लास्ट 20-30 years. नो, दैट्स नॉट दैट. बट हाँ, आई कुड फिगर आउट कि आई वाज नॉट परसुइंग माय इंटरेस्ट. बट इंटरेस्ट होते क्या है? आई डिडंट हैव अ सेंस ऑफ मीनिंग कि मैं कर क्यों रहा हूँ, बट मीनिंग कहाँ से लेके आऊँ? Similarly, slowly and slowly, these were all the things which I started realizing. Then I started having questions कि यार ऐसा क्यों हो रहा है मेरे साथ, मैं इसको navigate कैसे करूँ? YouTube पे गए, started reading a lot of books, also took some professional help, and what I realized over this time was कि बहुत बहुत ज्ञान है, बहुत सारी knowledge है, and it just got me confused कि ये करूं, मतलब एक बिलीफ सिस्टम ये बोल रहा है, एक सिस्टम ये बोल रहा है. लाइक अगेन देयर आर अ लॉट ऑफ, ऐसा है कि सभी ने ना अपना नेट फेंका हुआ है अपने फ्रेमवर्क्स का
कि यार इस तरीके से तुम अपनी लाइफ को कर सकते हो, तुम इस तरीके से अपनी लाइफ को प्रोसीड कर सकते हो। कई जगह मनी बहुत इंपॉर्टेंट है, किसी के लिए करियर बहुत इंपॉर्टेंट है, किसी के लिए रिलेशनशिप्स बहुत इंपॉर्टेंट है, इस तरीके से बहुत सारी चीजें इंपॉर्टेंट है। एंड somehow over the last 8 years, with a lot of setbacks, with a lot of good time, but with a lot of bad times, with while suffering from some mental health issues, kahin na kahin there was there were some good points, there were some good insights, I read a lot of books, I dived myself into our eastern tradition, jo hamara Indian way of living है, Indian philosophy, I dived myself into it, and there were बहुत सारा jewels, मतलब बहुत, it's a treasure, and that's what I want to talk today to every one of you. And so this is my introduction, and somehow why I am eligible to speak here, why I want to share my journey is that firstly I have found it to be fulfilling over the time, whatever steps I've taken, and I want to share it with all of you. And of course, it is for you to choose it how you want to do it, but I want to give you a perspective कि अभी अगर current life में if you are suffering just in a way, or if you are not contented, if you're not happy, if you're anxious, there can be several reasons. I do not know, अभी तो हम like we are not doing a one-on-one, but I definitely know कि things can get fine. We can work around something that things can turn out fine. और उसकी वजह से ऐसा नहीं है कि you will have to, like for a lot of people, money is something, and I do not deny it कि money is not important. I do not deny career is not important. But anyway, let's get into a formal discussion. Thank you for people who are posting questions. Thank you, Isha. I'll have a look and I'll take it into account in between. And for everyone, please keep posting your questions. I'll take a stop in between and we'll do it. So, okay. So ये मेरे बारे में था. And over the different other streams, I'll keep talking about my experiences. But this is what. ये एक short and sweet. This is about me. Now, आज के बारे में बात करते हैं कि ये वेलबींग क्या है, डिजाइनिंग क्या है, क्या करना चाह रहे हैं हम। तो आज हम एक ओवरऑल व्यू लेंगे कि वेलबींग होता क्या है। आप लोगों ने वेलबींग, यू मस्ट हैव हर्ड वेलबींग अ लॉट ऑफ टाइम्स, एंड दीज डेज तो आफ्टर कोविड इट्स दिस कीवर्ड हैज बीन यूज्ड लाइक एनीथिंग। हर जगह वेलबींग डाला जाता है, वो डाला जाता है। सो आई टेक अ मोमेंट एंड आई वुड लाइक टू आस्क यू, व्हाट डू यू थिंक what well-being is? जब well-being का word आप सुनते हो या well-being का भी खुद imagine करते हो about your own well-being, what do you think about it? What comes in your mind? What is well-being? So let's start with that. I'll wait for a few minutes for anyone if anybody wants to share their thoughts here, and we'll move on from there. So Isha is asking, so what habits can we build to become more calmer on a daily basis? Okay. So Isha, I'm parking your question for a while, and in the mid or at the end of the session, this will make sense, and we'll be talking about it. In fact, my second stream that I'm doing, this is exactly on the question that you're asking. So usko hum detail mein lenge, but we'll also take this. If anybody has any question, if anybody has any opinion ki well-being kya hai unke liye, please do it. Otherwise, let me share my screen and let's move on from here. Just give me a minute. I hope everybody can see my screen. Okay, so how to design a life of well-being? That's what our topic is. And ओके, सो वेलबींग जो यूजुअली होता है, इसमें हम किस तरीके से सोचते हैं जब हम लोगों से बात करते हैं? इट्स यूजुअली अराउंड की हेल्थ, कि मैं हेल्दी रहूं। what tool is this? This looks nice. So this is Figma. Okay, so this is Figma that I'm using, and I'm using this for a presentation, for a better presentation here. Yeah, okay. Thank you, Lokesh. Thank you, Kevin. हाँ, तो जब वेलबींग के बारे में हम बात करते हैं तो क्या होता है कि वेलबींग को हम हमेशा इसी तरीके से सोचते हैं कि हेल्थ या मेरी
फिजिकल हेल्थ, लाइक जैसे वेलबींग आया, हाँ यार अच्छा खाना है, एक्सरसाइज करनी है, 10,000 स्टेप्स वॉक करने हैं, दिस इज यूजुअली दैट आर कंस्ट्रक्शन इज, हमारे दिमाग में आता है. आई टेक अ मोमेंट एंड आई रीड रिसर्च पेपर में से एक डेफिनेशन पढ़ूंगा वेलबींग की, काफी इंप्रेसिव है. दिस इज अ वेरी लेटेस्ट रिसर्च पेपर जो पब्लिश किया है. And what they say is well-being has been defined as the combination of feeling good and functioning well. Of course, we all subscribe to this. The experience of positive emotions such as happiness and contentment. Okay, makes sense. As well as the development of one's potential, having sense of some control over one's life, having a sense of purpose and experiencing positive relationships. This is something that I really want to bring to your notice कि वेलबींग का जो स्कोप है ना, वो हमने बहुत ही नैरो कर रहा हुआ है. कि वेलबींग जैसे सोचा, हाँ यार अभी चल रहा है, अभी ना इट्स लाइक वन ऑफ आवर गोल्स की, जैसे अभी करियर ऐसा चल रहा है, हाँ वेलबींग पे भी ध्यान देंगे. अभी तो यार आई एम वेरी बिजी इन माय करियर एंड आई एम वेरी बिजी विद some other stuff. I'm very busy partying or I'm very busy thinking about any other thing. But well-being ऐसा नहीं कि एक अलग construct है. Well-being is a kind of a, बोलते हैं ना, जैसे ट्रांसेंड करता है. इट assimilates everything. वो हर चीज का एक फाउंडेशन है. So whatever purpose or whatever goals that you take in your life, well-being is that, and that is what definition gives us कि development of one's potential, having some control over one life. जब खुद ये फील होता है ना कि यार हाँ है कुछ कंट्रोल, लाइफ की सिचुएशन कैसे भी हो मेरे ऊपर, बट आई एम एबल टू somehow navigate through it. वो ऐसे नहीं आता है कि एक फॉल्स एक कॉन्स्ट्रक्ट या फ्रेमवर्क बना रखा है दिमाग में, हाँ कुछ भी. एक होता है ना टॉक्सिक पॉजिटिविटी जिसे बोलते हैं, कि चाहे तुम्हारे पास सिचुएशन नेगेटिव है तब भी तुम सोचते हो कि या थिंग्स आर पॉजिटिव, या नो कुछ है ही नहीं, प्रॉब्लम ही नहीं है. आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट इट. व्हाट आई एम टॉकिंग हियर इज कि हमारा जो पोटेंशियल है, हमारा पोटेंशियल बहुत ज्यादा है. लाइक व्हेन वी टॉक अबाउट आवर बॉडी, अबाउट आवर माइंड्स, it has a lot of potential. When we are able to realize that potential, and development of that potential is also comes into well-being. One more statement, and then I'll move forward. It is sustainable condition that allows individual or population to develop and thrive. Very important. So well-being is a condition जहां पर एक ऐसी सस्टेनेबल कंडीशन है जहां पर इंसान को लगता है कि यार मैं कर सकता हूँ डेवलप, लाइक मैं ग्रोथ कर सकता हूँ, चाहे वो किसी भी एरिया में हो वो ग्रोथ, तो वो सारी चीजें मैं कर सकता हूँ. ओके, नाउ लेट्स कम टू वेलबींग के डायमेंशंस की बात करते हैं. यूजुअली लोग क्या सोचते हैं, फिजिकल, अभी हमने बात की इसके बारे में. सबसे कॉमन अंडरस्टैंडिंग इसकी है फिजिकल की. दूसरी अंडरस्टैंडिंग इमोशनल की, कि थोड़ा इमोशनली आजकल मैं बैलेंस्ड हूँ. मेंटल हेल्थ इसमें डेफिनेटली प्लेज अ बिग रोल है. एंड वी यूजुअली नाउ, बिकॉज ऑफ लॉट ऑफ कॉन्वर्सेशंस अराउंड मेंटल हेल्थ, इमोशनल वेलबींग इज समथिंग दैट इज बीइंग रिकॉग्नाइज्ड. कि कैसे, एंड इमोशनल इंटेलिजेंस इज अगेन द टर्म दैट हैज बीन पॉपुलराइज्ड. सो इट्स इम्पॉर्टेंट, ये भी हमें समझ आता है. बट वेलबींग के बहुत सारे डायमेंशंस हैं. फिजिकल, इमोशनल, सोशल, हाउ यू इंटरेक्ट विद योर सोसाइटी, हाउ यू have your own relationships. उसकी well-being कैसी चल रही है भाई? Like you have a good, your physical well-being is fine, your emotional well-being is fine, but how is your relationships going on? How is your financial well-being? It is very important. ऐसा नहीं है कि usually क्या होता है कि when we talk about again well-being, it's like कि यार पैसे वैसे को सब भूल जाओ. We'll only be talking about कि body सही होनी चाहिए फिर सब सही हो जाएगा. True है, but financial well-being is important in this age. Similarly, career well-being, and a lot of my part, अगर मैं सच में बात करूं तो मेरे ख्याल से लास्ट 6 years मैं मेरी करियर वेलबींग अच्छी नहीं थी. आई वॉज स्विचिंग करियर्स, आई वॉज स्विचिंग इन सम, क्योंकि मैं उसके पीछे कोई फाउंडेशन या बेस नहीं लगा पा रहा था, परेशान था. Physically, I was doing kind of fine. Like I was doing exercise, I was having good food and a lot of other things. But ऐसा है कि एक बार तुम्हारा सिस्टम हिला तो ऐसा नहीं है कि फिजिकली तुम मेंटेन किए हुए हो तो तुम्हारी बाकी चीजें जो हैं तुम्हारी लाइफ की सिचुएशन को ठीक रख लेंगे. सो दैट वे. सिमिलरली स्पिरिचुअल, एंड स्पिरिचुअल को मैं आज डिस्कस नहीं करना चाहता हूँ, बिकॉज स्पिरिचुअल को लेकर के काफी लोगों का अवर्जन होता है कि यार स्पिरिचुअल की बात कर रहे हैं, पता है देखा ही नहीं कुछ, तो ये क्या है, गॉड की बात करेंगे. मैं एक स्ट्रीम करूंगा जिसमें आई वुड रियली बी टॉकिंग अबाउट स्पिरिचुअलिटी,
and how you can really think it in a very different way by not bringing in religion into that. और मैं उसका एक क्लू भी देता हूँ आज की स्ट्रीम पर. वो क्लू ये है कि स्पिरिचुअलिटी का हिंदी में जो ट्रांसलेशन है, और एक्चुअली हिंदी में जो उसका वर्ड है या संस्कृत में जो वर्ड है, वो है अध्यात्म. अगर आपने सुना हो, इफ यू वुड हैव हर्ड, अध्यात्म इज दैट वर्ड. एंड व्हाट अध्यात्म इज, स्पिरिचुअल से शायद समझ नहीं आता, स्पिरिट एंड ऑल. अध्यात्म इज सेल्फ स्टडी, study of the larger self, and that just changes, that perspective changes everything, but we'll be talking about it. So spiritual well-being important है कि यार तुम self को तो recognize करो, तुम्हें पता भी है कि who are you, like for whom are you making all these decisions. ये जो well-being कर रहे हो, ये तुम body हो या तुम ये mind हो या तुम्हारे relationships तुम्हारा part हैं, like all that stuff, and we'll be talking about it in later things. Similarly intellectual, and लोगों ने 8 dimensions बनाया, किसने 5 dimension बोलता है, कोई 7 dimension बोलता है. That is not the point. It's not the point कि ये dimension है, यही है. Point here is कि जो well-being है, वो well-being का scope बहुत बड़ा है, एंड जो लाइफ है वो well-being को हम ऐसे डिस्कार्ड कर देते हैं, हाँ हाँ कभी ध्यान देंगे, विल डू समथिंग. वो उसका स्कोप, वो हमारी लाइफ को क्या बोलते हैं उसको, जैसे यू नो इट इज इन एवरी, एक एक कण में है, हमारे ब्लड के एक एक कण में है, हमारे कंप्लीट एग्जिस्टेंस के कण, जो एग्जिस्टेंस का जो फाउंडेशन बेसिस है वो वेलबींग है, एंड फॉर ऑल दैट कम्स. ओके, नाउ आई विल जस्ट लुक एट इफ देयर आर एनी क्वेश्चंस. Well said. Even Jordan Peterson mentions this in his book, 12 Rules of Life. Definitely. In fact, 12 aspects of life होते हैं जो at the end of this stream we would be talking about. हम इसके end पर ये बात करेंगे कि कैसे ऐसे 12 हैं, इनको गोल्स को बनाए कैसे और इसको कैसे डिवाइड कर सकते हैं. सो वील कम टू दैट, बट आज का जस्ट फॉर एवरीबॉडीज इंफॉर्मेशन, आज के सेशन को हम थोड़ा ओवरव्यू ही रख रहे हैं, सो दैट आगे जो फ्यूचर वाले जो स्ट्रीम्स आएंगी वी कैन गो इनटू डेप्थ, ईच एंड एवरी पॉइंट के एक एक डेप्थ पर हम जा सकें. ओके, नाउ फ्रॉम हेयर लेट्स ओके, I wanted to do some kind of those effects. मैं भूल गया कि next वाली चीज को हमें कहाँ जाना चाहिए. Sorry about that. Okay. अब हम आते हैं कि ये तो है, इधर बहुत सारे constructs हैं, ये तो हमने बहुत ही कॉमन सा देख लिया है, but there are different constructs that now people have thought. जैसे मैंने स्टार्टिंग में आई वाज टॉकिंग अबाउट कि हम हमारे एनवायरनमेंट के हिसाब से देख रहे होते हैं, हमारे एक्सपीरियंसेस के बेसिस पे. अगर बहुत ही ट्रॉमेटिक एक्सपीरियंस हुआ है तो वी डेवलप अ लॉट ऑफ फियर्स, राइट. एंड फॉर इवन सिचुएशंस जो कि किसी और को ऐसा लगेंगे यार ये तो नॉर्मल है, व्हाई आर दे नॉट एबल टू ग्रो इन दिस एरिया, व्हाई आर दे थिंकिंग और डूइंग थिंग्स इन अ डिफरेंट वे, जो कि दिस इज नॉट द नॉर्मल. सो सेम गोज है कि ऐसे बहुत सारे फ्रेमवर्क्स हैं. अगर हम कुछ फ्रेमवर्क्स को पढ़ने की कोशिश करते हैं तो एक फ्रेमवर्क को हम पढ़ने की कोशिश करते हैं, वो है व्हील ऑफ लाइफ. व्हील ऑफ लाइफ क्या है? व्हील ऑफ लाइफ भी इनहेरेंटली वही है, इट इज जस्ट दैट इट्स एन एक्सपेंशन ऑफ व्हाट वी वर टॉकिंग देयर. It has these all dimensions, and what you can do. So what I'm giving today to you in this stream is one such framework. Wheel of Life framework को आप आगे जाकर के, let's say once you drop off this stream, read about it. What you will see is कि simple concept है, एक circle है, concentric circles हैं. Along the radius you have divided, you are seeing it in terms of the pointers. 10 अगर number, like right now currently you question कि यार मेरी currently how satisfied am I with my finances, let's say how satisfied am I with my health, and then you rate yourself. 10 number, 8 number, किसी में 1 है, किसी में 2 है, right. These are all the kind of numbers. Now if you see wheel of life का point ये है कि if your all these aspects of your well-being are balanced, then तुम्हारी जो wheel है ना वो लाइफ बहुत ही अच्छी तरीके से चलेगी. अच्छी तरीके से मतलब ऊबड़ खाबड़ नहीं चलेगी. अगर गाड़ी पंचर हो जाती है तो गाड़ी कैसे चलती है? नहीं चल पाती है, और बहुत ही मुश्किल से चलती है. तो तुम्हारे टायर जो है, इसको टायर मानो और टायर को देखो एंड सी किस टाइप का टायर है. दिस इज नॉट इवन अ सर्कुलर टायर, दिस इज लाइक, नाउ ट्राई टू सी कि अगर दिस इज योर लाइफ, दिस टायर इज योर लाइफ, एंड नाउ यू हैव टू वॉक, आगे चढ़ना है इस लाइफ में. सो इट वुड कम विद अ लॉट ऑफ बम्प्स, जंप्स, लॉट ऑफ बैरियर्स, बहुत पेन होगा, बहुत सफरिंग होगा. सो दिस इज वन थिंग जस्ट टू गेट एन आइडिया कि ओके वेयर एम आई राइट नाउ. सेकेंड जो है वो एक प्रिंसिपल है परमा. ये है पॉजिटिव साइकोलॉजी से, एंड पॉजिटिव साइकोलॉजी इज अ वेरी न्यू फील्ड. यू शुड चेक इट आउट.
काफ़ी अच्छे कॉन्स्ट्रक्ट्स बनाए, काफ़ी अच्छे फ्रेमवर्क बनाए हैं उसमें. एंड पॉजिटिव साइकोलॉजी अगेन टॉक्स अबाउट व्हाट इट सेज इज कि यार एक मीनिंगफुल हैप्पी लाइफ जीने के लिए पॉजिटिव साइकोलॉजी का टोटल एम ये है कि हाउ व्हाट इज द बेसिस. इट्स अ स्टडी ऑफ हाउ टू हैव अ हैप्पी कंटेंटेड लाइफ. उसकी साइकोलॉजी क्या है, उसके पीछे लाइक व्हाट वुड मेक श्योर कि तुम्हारी लाइफ जो अगर तुम इन वाले प्रिंसिपल्स पे चलते हो तो तुम्हारी लाइफ वुड मेक श्योर दैट योर लाइफ इज डूइंग फाइन. सो परमा इज वन सच फ्रेमवर्क. ये आगे और डेवलप हो गया है, यू कैन अगेन रीड अबाउट इट. हम आगे आगे वाली स्ट्रीम्स में विल बी गोइंग इनटू डेप्थ ऑफ इट, बट टुडे आई एम जस्ट गिविंग यू अ फ्लेवर, अ टीजर ऑफ दिस. सो पी स्टैंड्स फॉर पॉजिटिव इमोशंस. दैट अगर किसी को अपनी लाइफ देखनी है, मुझे मेरी लाइफ सही करनी है, मुझे क्या करना होगा, मुझे प्लीज बता दो, आई डोंट नो. जैसे लेट से कोई नया बिजनेस चालू कर रहा है तो वो यूट्यूब पर जाता है ना, या कोई बुक पढ़ता है, देखता है कि ओके होता क्या है, कितने डिपार्टमेंट्स होते हैं, कैसे करना होता है, नेटवर्किंग कितनी इंपॉर्टेंट है. एंड दिस इज वेयर जब मैंने अपना स्टार्टअप कर रहा था तब ओयो के एक्सपीरियंस को मैंने यूज किया था अपने स्टार्टअप को ग्रो करने में. बट देयर वर अ लॉट ऑफ थिंग्स दैट यू हैड टू रीड, राइट. तो सिमिलरली क्या है, तो ये वो है कि पॉजिटिव इमोशंस जो हैं दैट यू नीड टू वर्क ऑन डेवलपिंग दोज. So there are different practices for doing it. And Isha, to your question, this your question is here कि कैसी habits होंगी जो कि मेरे positive emotions develop करेंगी. Like to refine your question further, this would be that question. Like this framework can help you ask those very minute detailed question which will also lead you to think कि अच्छा ये वाली habits होंगी जो मुझे मेरे positive emotion देने चाहिए. Similarly, engagement. How engaged are you in the work that you do? कि आप होता है ना, अब इफ यू वुड हैव सीन व्हेन यू आर एंगेज, जब हम बच्चे थे जब खेलते थे माइंडलेसली 4 घंटे चले गए पता भी नहीं चला. गेम खेल रहे हैं 3 घंटे से खेल रहे हैं, इट्स लाइक ओ क्या हो भी गए 3 घंटे. या समटाइम्स यू सो एनग्रॉस्ड इन रीडिंग, इफ यू आर स्टूडेंट, इफ एनीवन हियर स्ट्रीमिंग इज अ स्टूडेंट, देन यू फील लाइक ओ टाइम वेंट बाय, आई जस्ट कुडंट सी इट. वो है एंगेज, व्हेन यू आर एंगेज. एंड इसके अराउंड एक और प्रिंसिपल है विच इज ऑफ फ्लो, कि कैसे टाइम फ्लो होता है. नॉट सॉरी, टाइम फ्लो नहीं होता, आई एम सो सॉरी. हाउ दैट कॉन्सेप्ट ऑफ फ्लो, कि जब तुम फ्लो में होते हो तो तुम पता भी नहीं चलता कि टाइम कैसे चला गया. and that is one part of like one aspect of happiness and contentment. Secondly, thirdly, relationships कैसे manage कर रहे हो. मैं I'm sorry I'm spending a lot of time on it, I don't want to, because आज हम इसको वैसे कवर नहीं कर रहे हैं. I have a lot of other things to cover. Relationship से meaning is very important. कि तुम अपनी लाइफ में कोई भी जो भी कर रहे हो उसका एक फाउंडेशन, कहीं मीनिंग है कि नहीं है, मतलब तुम कर रहे हो उसमें मीनिंग है कि नहीं है. तभी तो मेरी लाइफ, व्हेन आई टॉक अबाउट माय लाइफ, फॉर 5-6 years इट वाज गोइंग थ्रू दैट गड्ढा टाइप्स, कि मुझे मिल ही नहीं रहा मैं कर क्यों रहा हूँ. आई स्टार्टेड अ फर्नीचर रेंटल बिजनेस, इट्स गुड, आई फाउंड अ प्रॉब्लम वेयर पीपल वांटेड टू सॉल्व, बट इसके पीछे is there a bigger picture, like is there something, would I want to do it for next 10 years? When I started asking those questions, those were not, and then I had to drop it. Similarly with my other ventures in my life. Fifth is achievement. And very important, इसी के साथ हम जो next वाले पर आते हैं वो आता है psych app. And if anybody, I'll just check the box here. Can you talk about some more frameworks like Wheel of Life, please? Uh, Yajur, you asked it. If do you mean that the right now the frameworks I'm talking, these are those type of frameworks only? If you meant that, I think I'm talking about that. If you mean something else, please ask. Maintaining relationship is the most important thing, definitely, Lokesh, and that's why it holds very important part in our. कभी भी वेलबींग की टॉक होगी उसमें रिलेशनशिप बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत टाइम लेता है ना. करियर, रिलेशनशिप सबसे ज्यादा टाइम लेता है इन ओवरऑल whatever endeavors that we have. And जो एक होता है कि सेल्फ का टाइम, एंड अगेन आई एम गोइंग बिट फिलोसॉफिकल हियर, जो if we are able to devote, what I have seen from my experiences, that if you're able to devote more time with yourself and have peace with it, then you are able to reform and transform whatever is outside. वही जो outside inside की जो एक debate होती है और जो perspectives होते हैं, that's very true. So ओके, एक और फ्रेमवर्क है साइकोलॉजिकल कैपिटल, विच इज इट्स कॉल्ड अ हीरो प्रिंसिपल. एंड मैं ये सारे फ्रेमवर्क्स और ये क्यों बातें कर रहा हूँ, क्या मैंने गूगल कर लिया है ऐसे फ्रेमवर्क लिख के, एंड देन आई एम जस्ट इधर आप सबको आई एम जस्ट पेस्टिंग इट, कॉपी पेस्टिंग, एम आई डूइंग इट? नो. सो राइट नाउ व्हेन आई वाज टॉकिंग अबाउट कि, एंड जैसे मैं अपनी जर्नी के बारे में बात कर रहा था, इन 2021 when
I got very messed up कि यार ये चल क्या रहा है. Mentally I was not doing well. Physically also I started doing very unwell. uh, मैं प्री डायबिटिक हो गया था. एंड दिस इज नॉट अ सॉफ्ट स्टोरी, आई एम जस्ट टेलिंग यू कि ऐसा है कि तुम्हारे वेलबींग का कहीं भी व्हील ऑफ लाइफ जहाँ पे भी ऐसे हिलती है ना, तो तुम्हारी लाइफ पर, तुम्हारे इन जनरल, तुम्हारे डिफरेंट अदर एस्पेक्ट्स पर इफेक्ट आता है. ऐसा नहीं कि वो सब शील्डेड है. सो इन 2021 आई टुक अ ब्रेक, a indefinite break from career कि यार ये मेरे, आई एम नॉट एबल टू सॉर्ट इट आउट, आई एम नॉट एबल टू सॉर्ट माई ओन रिलेशनशिप्स क्योंकि वो अफेक्ट हो रही हैं. आई एम बिकमिंग समथिंग आई डोंट वांट टू. आई एम बिकमिंग वेरी नेगेटिव. एंड मुझे समझ ही नहीं आ रहा कि मैं ये क्यों करूंगा. मुझे मुझे पता है कि मैं 5 साल बाद इसको करूंगा ही नहीं. आई डोंट वांट टू डू दिस जॉब और आई डोंट वांट टू बी इन दिस काइंड ऑफ अ फील्ड. तो व्हाई डू आई वांट टू डू इट एनी एनी अदर डे. एक और दिन एक्स्ट्रा क्यों करना चाहूंगा. तो एनीवे इन 2021 आई टुक अ ब्रेक एंड आई वांट टू डू अ स्ट्रीम ऑन इट कि वो कैसा एक्सपीरियंस था. इट वाज अ 9 months आई टुक अ sabbatical. आई ट्रैवल्ड, आई डिड माय योगा टीचर ट्रेनिंग एंड बहुत सारे एक्सपीरियंसेस थे. बट हुआ ये कि आफ्टर दैट आई took a lot of time to think around कि यार किस करियर लाइन में, किस फील्ड लाइन में जाना है जहां पर शायद मैं कुछ मीनिंग डिराइव कर सकूं. एंड मे बी देर इज सम कंटेंटमेंट देयर. और ऐसा नहीं कि कंटेंटमेंट आप पहले एक्सपेक्ट करते हो कि ओ इधर कंटेंटमेंट मिलेगा चलो इसको करते हैं. नो, आई एम नॉट सेइंग दैट. इट इज अ सेपरेट थिंग एंड अगेन वील कम टू इट. सो हाँ, जब मैंने करियर चेंज किया तो राइट नाउ आई वर्क विद कंपनीज वेयर वी यूज साइकोलॉजी and Eastern practices like meditation, yoga to help employees of the company to have a better mind state, to have better mental health, and also to be able to realize their peak potentials. कि हम सब में बहुत पोटेंशियल है, we have a lot of potential, realize ही नहीं कर रहे हैं. तो रियलाइज कैसे करेंगे. रियलाइज क्यों नहीं कर रहे हैं. क्योंकि हम फंसे हुए हैं, हमें पता ही नहीं है कि कहाँ पे रियलाइज करना, मेरा पोटेंशियल है कहाँ पर, कहाँ पे रियलाइज करूँ. सो वी आर नॉट एबल टू फाइंड इट. सो दिस साइकोलॉजिकल कैपिटल, इट्स अ साइंटिफिकली वैलिडेटेड और इस पर बहुत रिसर्च हुई है और ये पॉजिटिव साइकोलॉजी का ही पार्ट है. एंड दिस हैज बीन व्हाट इज दिस इज कि आप अपने, अगर किसी को अपनी लाइफ अच्छी करनी है तो इस साइकोलॉजिकल कैपिटल डेवलप करो. जैसे हम फाइनेंशियल कैपिटल डेवलप करते हैं वैसे अपना एक माइंड का एक कैपिटल डेवलप करो. उसके अंदर ये 4 पार्ट्स होंगे: होप, एफिकेसी, रेजिलियंस, ऑप्टिमिज्म. होप, एंड इट्स नॉट लाइक कि ऐसे डेवलप कर लो, पढ़ लिया ना आज से होपफुल हो जाओ या ऑप्टिमिज्म रखो हर चीज में. नो, इट हैज अ डीपर मीनिंग टू इट एंड वी आर नॉट टचिंग इट, आई एम जस्ट गिविंग अ फ्लेवर ऑफ इट. सो एफिकेसी, और इसमें सबसे अच्छा मुझे लगता है एफिकेसी. दैट इज कि अगर इफ यू आर डाउटिंग कि यार क्या मैं ये कर पाऊंगा, तो गो बैक इन योर पास्ट एंड सी कि ऐसी कौन सी चीजें जो मैंने की हैं, लुकिंग एट योर अचीवमेंट्स, जैसे हमने परमा में बात कर रहे थे. सो दीज आर ऑल वेरी इंटररिलेटेड कि तुम्हारे अचीवमेंट्स कैसे रहे, हाउ हैव यू डन. सो दिस विल गिव यू कॉन्फिडेंस कि आई कैन डू इट. एंड दीज आर नॉट थियोरेटिकल कॉन्सेप्ट्स, इनके पीछे काफी अच्छी रिसर्च और काफी कुछ है. ओके, सो आई अगेन टेक अ पॉज एंड लुक आउट फॉर अगर कुछ क्वेश्चन है, क्योंकि ये इंटरवल है. दिस इज अ 50% ऑफ इट बिकॉज माई पॉइंट वॉज नॉट जस्ट टू गिव यू दिस कि ये कर लो. I'm going a bit more deeper than this, where I think my experience and I think कि जहाँ पर सारे answers छुपे हुए हैं. This is where I would want to reach to, and I'll just see if there is. So Rajat is asking, what kind of workshops do you conduct for companies? So I don't conduct workshops, Rajat. So what we do is there's a uh, app, जैसे mental health app है. We go out to companies and we say कि यार we'll do a mental health assessment of your employees, and from there on उससे एक लेवल पता चल जाएगा. जैसे लेट्स से व्हील ऑफ लाइफ कॉन्स्ट्रक्ट ले लिया, अभी साइकोलॉजिकल कैपिटल एक कॉन्स्ट्रक्ट है which we have taken. Okay, yeah, Srinivas, I think this is recorded. This would be available, and yeah, please do watch the next part of it. I'm sure you'll like it because I'm really excited about it. Bye. Okay, so yeah, so I was talking about कि we do a mental health assessment, and from there on what we say is कि यार ये 2 टाइप के different ways हैं. If a person likes कि उसे psychological help they want to take, psychological help में एक external बंदे से बात करना is one kind of help. Doing gratitude journaling is one. 5 senses meditation is one. So these are different other tools that you have. Similarly, Eastern Wellbeing, जहाँ पे मेरा interest और मेरी expertise lie करती है actually, that's where we are going to come to now. That is where we do कि कौन सी meditative practices, कौन सी contemplative practices, कौन सी yoga practices
would be suitable for such kind of a problem. किसी को स्लीप टाइप के इश्यूज, किसी को एंजाइटी इश्यूज है, किसी को इन जनरल डिफरेंट टाइप के इश्यूज हैं, किसी को बिलीफ सिस्टम का प्रॉब्लम है कि कोई बिलीफ सिस्टम नहीं है. जैसे मैं बोलूँ तो मुझे ऐसा लगता है अपने पर्सपेक्टिव से, जब मैं बाकी लोगों से कई बार बात करता हूँ, मेरा क्वेश्चन यूजुअली होता है कि व्हाट इज योर फिलोसफी ऑफ लाइफ और व्हाट इज योर वर्ल्ड व्यू. और ये मैं कुछ इसलिए नहीं पूछता हूँ ये क्वेश्चन कि ओ देखो मैंने क्या क्वेश्चन पूछा. नो, नॉट बिकॉज ऑफ दैट. इट्स जस्ट दैट आई वांट टू अंडरस्टैंड, क्योंकि एट वन पॉइंट ऑफ टाइम I also didn't know. If somebody would ask, it would be like यार जियो और जीने दो. That used to be a very simple philosophy, but बहुत ही complex है life. वैसे बहुत simple है, but जब अंदर जाओ तो काफी complex है. How would you solve for it? So yeah, this is something. Akshay, yeah, and there are any videos we can watch about these workshops? So these are Akshay, these are not exactly workshops. These are, as I said, कि एक कंपनीज के साथ काफी मिल करके काम होता है. And this is through the app. Then we do a mental health assessment after 3 months, and we say कि देखो इधर ये improvement हुआ है, and this is what. Though this is very specific to those companies and the coaches that we hire. And I would not say I'm a coach. To be very frank to everyone, I'll not say. I'm sharing my information, what I have learned while working with these employees and from my own experiences or apne friends and family when I implemented all these things which I'm talking, results were good. So I'll not say कि I do not conduct these workshops, but we have a lot of people who do. Okay, anyway. What app is this? This is Tatsam and Urban Health. So there are two apps, there are two companies that I work with, and I can share the links. So Urban Health and Tatsam, these are two companies. Okay, now from here on, Acha, so now your question can be कि यार it's good. I today I got to know कि हमारे well-being के aspects कितने हैं. Good, I got to know this. मुझे ये भी पता चल गया कि उसको कौन से framework में मिलने चाह रहा हूँ. मुझे psychological capital अच्छा लग रहा है, मुझे परमा अच्छा लग रहा है, इसके बारे में पढ़ूंगा, I'll do it. But before you get into that trap, या तुम ये question बाद में पूछो, मैं पहले पूछ लेता हूँ. वो question ये होगा जो ईशा ने पूछा था कि हैबिट्स का बेसिस क्या होगा डेवलप करने का. What would be the basis of it? What would be the basis of? I'll come to this just a minute. Yeah, what would be the basis of this? कि बेस आज मैं सोच रहा हूँ मुझे मीनिंग ढूंढ रहा है लाइफ में. आई एम जस्ट टेकिंग एग्जांपल. हाउ डू आई फाइंड दैट मीनिंग? लाइक मुझे हो सकता है कि आज गेम खेलना अच्छा लग रहा है, उसमें ही मेरा हैप्पीनेस कंटेंटमेंट है. तो यही है क्या मेरा मीनिंग लाइफ का? When you'll go 2 years down the line, you might think, just I'm saying, if any gamers here, I'm not saying कि if you're taking it as a profession, well and good, but if you're taking that as an excuse, or if you're taking anything else as an excuse, यार मुझे तो ना पूरे टाइम YouTube देखना पसंद है, या मुझे पूरे टाइम क्रिएटर देखना पसंद है, या Netflix देखना पसंद है, या मुझे पूरे टाइम लेट्स से कुछ और करना पसंद है. मुझे कैसे पता चलेगा कि ये मेरा पर्पस कहीं अलाइन हो रहा है इसके साथ, या मैं अपना अलग से पर्पस बनाऊं, या मुझे कैसे पता चलेगा? ये सब तो नॉलेजेबल कॉन्स्ट्रक्ट हैं इसके अंदर. एंड वी नो आवर माइंड्स आर सो शार्प दैट वी आर एबल टू फिट डिफरेंट थिंग्स इनटू इट. हम दूसरी चीजें उसके अंदर डाल सकते हैं. और होता क्या है, व्हाट ईशा हैड आस्क्ड, कि लाइफ जो है ना, इस साइन वेव का एक एनालॉजी ले सकते हैं हम. एवरीवन कैन टेक दैट एनालॉजी. टाइम आगे बढ़ता है, हम लाइफ के साथ जब लाइफ में अप जाते हैं, एम्पलीट्यूड हाई है, आज कुछ बहुत ही सही हुआ ऑफिस में, लेट्स से देयर वाज अ वेरी गुड टाइम, एक प्रोजेक्ट था काफी सही हुआ और काफी तारीफ हुई. अब मे बी यू चेंज अ जॉब और यू गॉट अ हाइक, और मे बी इन योर रिलेशनशिप समथिंग गुड हैपेंड, फैमिली के साथ कुछ हुआ, तो यू आर जस्ट राइडिंग दैट हाई विल कम डाउन. कहीं पर भी देख लो अपने पूरे एक्सपीरियंस में, दैट हाई विल कम डाउन. न्यूरोलॉजिकली डोपामिन भी इसी तरह काम करता है, दैट देयर इज अ हाई, इट कम्स डाउन, दैट्स व्हाई यू फील अनमोटिवेटेड टू डू थिंग्स जो तुम्हारी हैबिट नहीं है. सो व्हाट विल हैपन इज कि लाइफ इस तरीके से चलती रहती है, एंड वी आल्सो लिव आवर लाइफ अकॉर्डिंग टू दिस कि ओके आज हाई, ओ लो, वी सैड. समटाइम्स सैडनेस इतना, उसका जो एम्पलीट्यूड इतना नीचे नहीं होता जितना हम उसका एम्पलीट्यूड नीचे कर लेते हैं ड्यू टू आवर सिस्टम्स, ड्यू टू बिकॉज हमारी जो वायरिंग हो रखी है, जैसे मैं बात कर रहा था कि हमारी एनवायरमेंटल वायरिंग, हमारी एक्सपीरियंशियल वायरिंग ऐसी है दैट इट विल find this negative or this that downtime in our life as
oh, something really bad has happened. And even if you have this upper curve, तो जितना वो lower curve गया है, वो आपके upper जाने के बाद आपने उसको ऐसा बना लिया. So Buddha says there are two arrows of suffering. There are two arrows of suffering. One arrow is what life throws at you. Here are arrow. This is that arrow. And the second is how you perceive that pain or how your mind sees that suffering. So हो सकता है कि आपको जब हाई आता है तो बहुत हाई आता है, बट जब लो इतना लो है, उसका लो आपका बहुत नीचे तक जाता है कि नेक्स्ट टाइम जब आपको पास हाई आ रहा है, यू आर हैविंग सम गुड एक्सपीरियंस इन लाइफ, यू आर स्टिल बिलो दिस लाइन, यू आर स्टिल बिलो दिस न्यूट्रल लाइन. एंड दैट इज जस्ट एन एनालॉजी टू अंडरस्टैंड यार ऐसी लाइफ है, तो फिर कैसी होनी चाहिए लाइफ? What should be then the life be type of? So what are Eastern ways say, मतलब जितने, और मैं Eastern कर रहा हूँ, I'll talk to you about कि है क्या Eastern. So सारे ये बोलते हैं ना कि you should have that balance, you should have that equanimity. If you search that word, beautiful meaning it has, and this line represents that. कि लाइफ में तो अप डाउन आ रहे हैं. What you have to develop over time, the kind of habits or kind of practices that you would have to do with your body, with your mind, with your overall foundation, would be that you stay in this line. कि आप अगर हैप्पीनेस के साथ बहुत ऊपर गए हो तो नीचे आएगी, तब आप उसी पे राइड करोगे, you'll keep on riding it. So this is the line there, you कि लाइफ तो ऐसे चल रही है, you're always there, you're unconcerned कि हैप्पीनेस है, you enjoyed it, suffering है, you just observed it, it's there and something. And I'm not saying कि it's easy, and I'm not saying कि ऐसे हो जाएगा. I'm just telling you this is the perspective through which people say about equanimity, through people say about कि यार meditation करने के बाद ना थोड़ी चीज़ें I'm able to see things as they are. And this is what seeing things as they are. Right now you're seeing this sine wave. This is कि अप है, ये डाउन है, अप है, डाउन है, और एक स्ट्रेट लाइन टाइम सीधा चल रहा है. That is the reality in that way कि ऐसे ही चल रहा है, लाइफ ऐसे ही थ्रो करती है. Okay, I'll come to this. Who am I? This is how life in Isha. This I'm going to the comment box here. This just shows how life and mathematics are interlinked and are the absolute truth. Yeah. Okay. I would like personally. It's very fascinating when you try to connect life and with other different aspects, and this is really a very beautiful perspective to put into that. And okay, so abhi comments are till here. Okay, so what I was trying to say here was कि I'm trying to just frame it in a better way so that you जो अभी तक हम बात कर रहे हैं उसका एसेंस आ सके. हाँ, ओके. सो जो क्वेश्चन था, वो क्वेश्चन क्या था हमारा? वो क्वेश्चन ये था कि मुझे फ्रेमवर्क, मुझे वेलबींग के बारे में पता चल गया, मुझे फ्रेमवर्क्स मिल गए, बहुत अच्छा. अब मुझे गोल्स बनाने हैं. ओके, गोल्स कैसे बनाऊं? मैं कैसे बनाऊं कि मुझे लेट्स से फाइनेंशियल गोल बनाना है, तो वो फाइनेंशियल गोल कितना होना चाहिए? मुझे मिले तो आई एम ओके विद 100 करोड़, I'm okay with 10 CR, I'm okay with let's say 50 lakhs, something like that. तो वो गोल कहाँ पे रोकूंगा मैं? उसका बेसिस क्या होगा? So similarly, so when you let's say start implementing the Western concepts, is Eastern और Western की थोड़ी debate है. What we were discussing, those are Western concepts in a way. Wheel of life is like it's a very shared kind of a concept. तो बात ये आती है कि जब हम हमारी इंडियन फिलॉसफी में जाते हैं, इंडियन फिलॉसफी में का मतलब है कि जब हम हमारे उपनिषद को पढ़ते हैं, जब हम भगवत गीता पढ़ते हैं, जब हम हमारे योगिक सिस्टम्स को देखते हैं जो कि रिलीजन बेस्ड नहीं है, या जब हम बुद्धिज्म को देखते हैं, जब हम और डिफरेंट टाइप की प्रैक्टिसेस को देखते हैं, सबकी सेंट्रल टीचिंग, सेंट्रल एक ही क्वेश्चन है. इनफैक्ट मुझे ये क्वेश्चन इधर पुट नहीं करना चाहिए था पहले. आई शुड हैव आस्क्ड यू एंड मे बी दिस वुड हैव बीन अ गुड थॉट एक्सरसाइज, बट एनीवे दिस. सो दैट इज दिस क्वेश्चन कि हु एम आई. तो हु एम आई से क्या है, मैं कौन हूँ? आई एम भुवनेश एंड yeah, I gave you my introduction in the starting, right? इतना साल का एक्सपीरियंस है, मैंने ये किया. So overall ये सारी की सारी चीजें एक जगह पॉइंट करती हैं कि हमारा इग्नोरेंस टूवर्ड्स अस, हाउ वी परसीव आवरसेल्फ. बाहर की तो छोड़ो, बाहर के वर्ल्ड को कैसे परसीव करते हो, हाउ यू परसीव योरसेल्फ, और हाउ द काइंड ऑफ
association that you have created with yourself, that is not correct, that is ignorance. वो काफी ignorant perception है तुम्हारा अपने बारे में. And sometimes we also we call it अहम, ego. कि ये जब तक बेसिस अपना ईगो रहेगा, अहम रहेगा, उसके अराउंड वॉट एवर गोल्स, वॉट एवर वेलबींग और वॉट एवर फ्रेमवर्क दैट यू यूज, कि मैं इसमें मेरा फाइनेंशियल गोल ये है, मेरा स्पिरिचुअल गोल ये है, मेरा नॉलेज का गोल ये है, मुझे इतना पढ़ना ही पढ़ना है, this would be driven by something superficial which we associate ourselves. और इस ईगो बना कैसे? ईगो बना है हमारे अगेन एनवायरमेंट से, हमारे एक्सपीरियंसेस से. मान लो ऐसे एनवायरमेंट ही नहीं होता हमारे पास, तो हमारे जिस टाइप के डिजायर्स होते हैं, या जिस टाइप की लाइफ में हम डिसीजन लेना चाह रहे होते, दे वुड हैव बीन डिफरेंट. We all can agree on that, right? So that's what our Indian system says, or our Eastern system says, ki we need to realize what is our true nature, and by the time we do not realize it, we'll keep on making goals and we will keep on failing. We may keep on failing. I don't want to say that ki we will, but आप हैबिट बनाओगे, हैबिट नहीं बन पाती. क्यों नहीं बन पा रही? मुझे सुबह जल्दी उठना है. क्यों उठना है? क्योंकि मुझे ये करना है, क्योंकि मैं सुबह उठूंगा, क्योंकि हमने YouTube पे पढ़ा है, या मैंने इस क्रिएटर पे किसी की स्ट्रीम पर देखा था कि आप सुबह उठोगे तो आपके पास 2 घंटे होते हैं, उस 2 घंटे में आप वो सब कर सकते हो जो आप करना चाहते हो, वो आपको जॉय देगा, बाकी वाला डे आप अपने हिसाब से कैरी करो. वेरी गुड, अच्छी स्क्रिप्ट है, अच्छी लाइन है, बट व्हाट टू डू विद इट? लाइक आफ्टर सम टाइम यू विल रियलाइज दैट दिस इज अ स्क्रिप्ट दैट यू आर फॉलोइंग. So that's why it's very important कि we start questioning that who am I, मैं कर किसके ले रहा हूँ, मैं हूँ कौन, मतलब who am I doing. तो यूजुअल जो हमारी अंडरस्टैंडिंग होती है वो होती है कि मैं माइंड हूँ या बॉडी हूँ. पेन होता है तो मुझे पेन हुआ, कुछ दिमाग में कोई प्रॉब्लम तो मेरे दिमाग में प्रॉब्लम है, मुझे कुछ लग रहा है. दैट इज आवर एसोसिएशन, एंड इन इटसेल्फ इट्स अ वंडरफुल ब्यूटीफुल टॉपिक. आई विल बी डूइंग इट ऑन अनदर स्ट्रीम, कि हमारा इंडियन सिस्टम किस तरीके से आई को, अहम को परसीव करता है, or greater. And Isha, you're talking about the absolute truth. What is that? The answer of this question is the absolute truth. And this is, we'll do it later. Okay. Coming back, changing gears here. बात ही आती है कि, just a minute. Yeah. So we were here कि well-being हो गया, ये हो गए. Basis क्या है? Foundation क्या है? आप बिल्डिंग तो ताश के पत्तों की बना सकते हो, बहुत ब्यूटीफुल लगती है, बट उसका फाउंडेशन कैसा है? हाथ मारोगे गिर जाएगी. तो एक 8th या 9th क्लास में एक चैप्टर था हिंदी में, आई डोंट नो इफ एनीवन अभी है कि नहीं है, वो ये था कि कंगूरे की ईंट और एक नींव की ईंट. सो जो नींव की ईंट है वो, मतलब कंगूरे की ईंट वो होती है जिसको इट्स लाइक कंगूरा एज इन, जो उसकी पीक पर, जो टॉप पर किसी बिल्डिंग की टॉप होती है बहुत शाइनी, बट जो बिल्डिंग का जो बेस है, वो बेस किसी को नहीं दिखाई देता, कोई उसकी तारीफ भी नहीं करता, कोई उसको देखता भी नहीं जाकर कि उसका बेस क्या. अगर मान लो किसी बिल्डिंग का बेस अगर स्ट्रांग नहीं है, तो उसकी शाइनी, कितनी भी शाइनी बिल्डिंग, कितनी भी शाइनी टाइटल हो, इट कैन फॉल एनी टाइम. तो सिमिलरली हमारा जो बेस है, मुझे जो मैं मॉडल्स डिस्कस कर रहा था उसमें आई वॉज नॉट एबल टू फिगर आउट फ्रॉम माई एक्सपीरियंस कि वो बेस क्या बेस रखूँ मैं. सो दिस इज what I have seen, कि इसे बोलते हैं 4 एम्स ऑफ लाइफ. हमारी इंडियन फिलोसफी में ऑलरेडी ये 4 एम पैसा आइडेंटिफाई किया हुआ है. जस्ट फॉर टू एवरीबडी सरप्राइज मी, एटलीस्ट आई वाज सरप्राइज दैट कि 4 एम्स में अर्थ, काम, मोक्ष और धर्म. अर्थ जो है, अर्थ इकोनॉमिक्स, मनी, जिसके अंदर सारे फाइनेंशियल और मनी रिलेटेड और इस रिलेटेड सब आते हैं, वो आइडेंटिफाई किया हुआ कि दिस इज वन ऑफ द एम्स ऑफ आवर लाइफ. So they've already figured this out कि ये तो है ही. Similarly, they've also identified that kama, pleasureful life, pleasures, desireful life. हमें desire होती है ना कि यार ये करूंगा तो अच्छा लगेगा, या different other pleasureful activities हैं, वो करूंगा तो अच्छा लगेगा. So they have already identified कि ये भी है, कि ये तो होना ही है. तो ये 4 एम्स हैं तुम्हारे. हम जो मोस्टली अभी वाले सिस्टम में, what I see and at least in my experience what I was seeing was that I had अर्था एंड कामा बहुत ज्यादा मेरे ऊपर चढ़े हुए थे, वेयर, क्योंकि इनका जो अगेन बेस था, they were part of my aims. बट जो धर्म था, धर्म इज नॉट रिलीजन हियर, प्लीज आई वांट टू pinpoint this, that please don't get confused with this कि धर्म अच्छा रिलीजन मानना चाहिए, मैं तो एथिस्ट हूँ.
I do not subscribe to this. No, this is not dharma here. This is not that dharma. I would want you to search after this stream कि धर्मा जो है वो क्या मीन करता है. But very like in a simple way, dharma is a set of values, ethics, moral values. अभी क्या imbalance हो रखा है? इम्बैलेंस ये है कि जो फाउंडेशन है, अगर वो धर्मा की फाउंडेशन है, तो उस धर्मा की फाउंडेशन एक डोर पकड़ के रखेगी अर्थ और कामा पर, कि वो तुम्हारे उन सारी चीजों को इट विल गेट दैट इनटू मॉडरेशन कि तुम्हें जरूरत कितनी है. इफ योर धर्मा और इफ यू हैव वर्कड ऑन इट, एंड लेट मी कॉल इट, इसको बहुत ही सिंप्लीफाई करता हूँ कि इफ यू वुड हैव प्योरिफाइड योर माइंड, एंड बाय दैट प्योरिफिकेशन आई मीन दैट इफ यू वुड हैव वर्कड ऑन योर माइंड, if you would have done practices that will actually help you realize the potential of mind, and that वो अगर तुमने वही कर लिया है तो वो जो वंडर्स करेगा तुम्हारी दूसरे एस्पेक्ट्स ऑफ वेलबींग. तो वेलबींग के सारे एस्पेक्ट आ गए इसमें. अर्थ आ गया, कामा आ गया, वही तो थे सारे वेलबींग. और धर्म आ गया कि हाउ आर वी इंटरेक्टिंग विद आवर सोसाइटी, हाउ आर वी थिंकिंग अबाउट आवरसेल्व्स एंड ऑल ऑफ दैट स्टफ. सो ये एक इम्पॉर्टेंट फ्रेमवर्क है जो एक मुझे एक फाउंडेशन देता है. व्हाट आई हैव रियलाइज्ड, इट्स अ वेरी गुड, people should read about it. And ये जो फोर्थ है, इसको ऐसा बोला जाता है मोक्ष. मोक्ष बहुत लोगों ने सुना होगा, राइट? निर्वाण, transcending this material life. So this is the fourth thing which is usually it's said कि अगर आपको अपने current जो आप life जी रहे हो, if you want to live it fine, then just have dharma as the basis and be indulged in artha and kama and live a good life. Live a life where you will feel happy, contented. But if you want to transcend all of it, then that is the fourth part. तो अब monks की बात करते हैं. monks क्या करते हैं? monks जो है वो ये वाला 3 वाले पार्ट को स्किप करके उनकी फाउंडेशन होती है मोक्षा. That's why they renounce everything. I am on this path of moksha. And what is moksha? Is again, it's a heavy topic to talk about. But again, it's just that you are on the path of realizing who am I. So क्या इसका मतलब ये है? क्या am I claiming on the stream that okay, everybody should have this aim in life, बाकी सारे aim तो ऐसे ही है? No, I'm not saying that. That is for you or anyone else to decide. Like for you to decide for yourself. What is that? But what you definitely need to do is that you should understand कि ये क्या है. Like मेरा अभी current structure कहाँ पर fall करता है. So again, इसी topics के बारे में we'll be doing more about it. Very quickly, yoga के बारे में सुना होगा. Yoga is another construct that helps people. I think I might have run over time, and if anybody अगर ऐसा लग रहा है कि if I'm over time, anybody please just let me know. But I'll try to wrap it up by 7. Okay. So just a minute, Kevin. You had asked that what is artha. I think you would have got the answer. Artha is, agar we talk about in a very common term, that is related to our finances, to our money, to the life, जहाँ पर money economics का involvement है. अर्था जो है हिंदी में जो word है वो अर्थशास्त्र जो है economics, so that is what that artha means. So उसके purview में जो भी चीजें आती हैं, that all comes there. Okay, this is again important. So a lot of you might have heard about hatha yoga, yin yoga, ashtanga yoga, anger yoga, tantra yoga. ये योगा सुने होंगे. एंड मुझे तो काफी क्यूरियोसिटी होती थी कि यार ये है क्या, लाइक व्हाई आर देयर सो मेनी योगा, इनमें डिफरेंस क्या है. बट अगेन टुडे वी आर नॉट गोइंग डीप इनटू इट. बट योगा की जो फिलॉसफी है, व्हाट इट टेल्स यू इज कि आपको अगर लाइक इफ यू वांट टू डिजाइन योर लाइफ, लेट्स टॉक अबाउट अ लाइफ वेयर दैट एम इज moksha. So these are these 4 higher yogas which will help you do it. So let's say Raja Yoga is something which is the path of mind. Jnana Yoga is the path of knowledge. Bhakti Yoga is the path of love, devotion. Karma Yoga is the path of action. And for us, let's say assuming that students are here or professionals are here, I would say Karma Yoga and Jnana Yoga are these 2 things which we should focus a lot on. कि हमें हमारे रियल नेचर के बारे में इग्नोरेंस है. तो इग्नोरेंस कैसे जाएगा? जब नॉलेज की लाइट आएगी. हमें what we should be doing, we do not know what to do, then karma yoga
is that kind of a yoga which is a path of action where you renounce whatever fruits that you're going to get out of that activity. So these are all these different types of yoga. और ये ऐसा नहीं योगा जो हमारे दिमाग में परसेप्शन है कि आसन कर रहे हैं, प्राणायाम कर रहे हैं, कपालभाति कर रहे हैं. नो, दैट इज योगा. बट these are the मतलब योगा इन itself is a vast word. अगेन जैसे वेलबींग के बारे में हम बात कर रहे थे, योगा उस तरीके से एक वास्ट वर्ड है जिस टाइप के these are all those yogas which we were talking about. ओके, एंड इनका कनेक्शन क्या है, राजा योगा का hatha योगा से क्या कनेक्शन है, इसका क्या कनेक्शन है, ये क्वेश्चन मार्क है. एंड दैट क्वेश्चन मार्क, द आंसर इज द आंसर टू हु एम आई. एंड दैट इज व्हाट, अगर एक मॉन्क का गोल देखें तो वो इन चार में से कोई एक पाथ चूज करता है. So just to give you an example, Jnana Yoga is something, if people would have heard about जैसे अद्वैत वेदांता जो है, that is a path of knowledge. This is स्वामी विवेकानंद जुड़े हुए हैं, मतलब he was the he's called Neo Vedantin. Bhakti Yoga is, for example, is ISKCON. So if you will see कि they are totally devoted and they are into it, right? Similarly, Raja Yoga is path of meditation. This is something which has been accessed by a lot of people, क्योंकि भक्ति में लीन होने के लिए there is a lot of belief system that would need to come. ज्ञान योगा में there is a lot of knowledge that you would have to acquire, read the Upanishads, read text and all. राजा योगा is something जो अभी हमारे वेलबींग इंडस्ट्री में चल रहा है कि यार मुझे प्रोफेशनल एक्सीलेंस चाहिए, मुझे मेरी लाइफ अच्छी करनी है, कैसे करूँ? मेडिटेट करो. कैसे करूँ? कॉन्सेंट्रेट करो. Get your, just stay with your mind, get your mind to calm down, to bring it at peace, to bring it at rest, to bring it at stillness. बहुत सारे words जो आजकल हम use करते हैं. So this is that path which we'll again be talking about all of these things in the future streams. Karma yoga is something I think जिसको भी जो प्रोक्रेस्टिनेशन करता है, या जैसे मैं I procrastinate a lot. I just made this slide a few hours back. So I'm just saying this karma yoga is something that can really transcend the way you work, because this is the path of action, and what comes into it once you have understood it and once you have of course start practicing it, will do it. And yeah, I mean, and I think हमारे पास टाइम नहीं है इसके बारे में बात करने के लिए, बट आई विल जस्ट से कि अगर ओवरऑल अभी हमने बात की थी परमा, रिमेंबर परमा, पॉजिटिव इमोशन, एंगेजमेंट, रिलेशनशिप्स, साइकोलॉजिकल कैपिटल, व्हील्स ऑफ लाइफ. ये जो 5 कोशा एनालॉजी है या 5 कोशा का जो फ्रेमवर्क है, आई थिंक टू हैव अ लाइफ ऑफ वेलबींग एंड कंटेंटमेंट, दिस इज दैट बेस फ्रेमवर्क दैट आई वुड यूज, क्योंकि दिस डिफाइंस एवरीथिंग. मुझे न्यूट्रिशन पे ध्यान दूं, या मैं एक्सरसाइज करूं, या मैं योगा करूं, या भागूं, मैं करूं तो कितना करूं, मतलब मैं जो जिम करनी है तो मैं बॉडी किसके लिए बनाऊं, या बनाऊं तो किस लेवल तक बनाऊं, मैं कितना घुस जाऊं. अगर मैं रनिंग करने लगा हूं तो क्या मैं मैराथन रन कर लूं, क्या मैं ये कर लूं? हाउ वुड यू अगेन डिफाइन कि वेयर डू यू stop with the goals, or what is the limit of your goals? So just to wrap it up, what we are doing, what we talked about here is, and as just review is कि पहले वेलबींग को समझना जरूरी है, जो आज हमने समझा काफी डिटेल में. देन इट इज ऑल्सो इम्पॉर्टेंट कि वो समझने के बाद once just stop after the stream, stop and try to observe these different aspects of your life, whatever we talked around well-being. And now if you, let's say if you want to start कि यार मुझे गोल बनाता हूँ, इसमें मैं गोल जब बनाने लगूंगा तो मे बी योर सेल्फ, you are self aware, I'm hope अब सब बाकी सब बहुत काफी self aware हैं, तो they would be able to, हाँ मुझे पता है मुझे क्या करना है, मुझे ऐसा करना है, हॉबीज में मुझे ये करना है, एडवेंचर वाली चीज में मुझे ये करना है, करियर में मुझे ये करना है, ये गोल है, मुझे एक बुक लिखनी है, ये लिखना है, ऐसा ऐसा कुछ करना है, these all those things. But अगर ऐसा है कि you again think कि this is something that you are doing out of some compulsion, because this is how you perceive that you want to do for the society, or maybe society has an eye on you and you're doing it for some reason. If you think that this will make you happy, then you need to rethink. And I think जो हमारे Eastern systems में, what the kind of frameworks that we have talked about, there are a lot of other frameworks. Those can be a good basis to get you into the ground, and then from that system see कि okay मैं life कैसे design करूँ.
डिजाइन का मतलब ये होता है टू क्रिएट समथिंग फॉर अ पर्पस. इफ यू रीड इट ऑन गूगल, काफी बढ़िया डेफिनेशन है, विच सूट्स अस. टू डिजाइन समथिंग, टू क्रिएट समथिंग, टू बिल्ड समथिंग फॉर अ स्पेसिफिक पर्पस. सो इधर हम बात कर रहे हैं कि अगर हमें, if I think, according to me at least, that was my motivation, that a life of happiness and contentment is something that I look forward to. How do I get it? आई डोंट नो. मतलब मुझे पहले नहीं ऐसा पता था, बट व्हेन आई थॉट कि यार दीज आर सम थिंग्स दैट आई कैन ट्राई इट आउट. एंड ऐसा नहीं है कि ये वाले फ्रेमवर्क्स जो हैं ये मैं लाइक आई एम ट्राइंग टू पुश दीज ऑन टू यू. नो, आई एम जस्ट सेइंग दैट इन सभी के साथ आई हैव वर्कड विद पीपल, आई हैव वर्कड सम ऑफ दोस फ्रेमवर्क्स ऑन मी, एंड आई थिंक दोज हैव रियली हेल्प्ड मी टू गेट स्टेबल. कि ओके, जो ये साइन वेव की हम बात कर रहे थे, वो जो साइन वेव है, इसमें तुम इस लाइन पर कैसे रह सकते हो. दिस समथिंग दैट काइंड ऑफ अ ग्राउंडिंग दिस कैन गिव यू. अगर हम हमारे एक्सपीरियंसेस से ग्राउंडिंग निकालेंगे, और तो आई एम नॉट श्योर, आई एम रियली नॉट श्योर कि हाउ हेल्पफुल इट कैन बी और वुड बी. सो आई just a minute. Okay, so I'm ready to take a few questions here, and I'll go to the Isha's question. So, what habits can we build to become more calmer on a daily basis? Okay, so Isha, let's talk about this. अगर हम यू वांट टू काम योरसेल्फ ऑन अ डेली बेसिस, तो सबसे पहले तो डेफिनेटली इंपॉर्टेंट है, बहुत ही बेसिक टाइप की बात करते हैं कि किसी भी टाइप का जो कामनेस नहीं आ रही है, लेट्स से बॉडी में कहीं रेस्टलेसनेस है, आई एम अज्यूमिंग हियर देयर इज अ assumption दैट यू आर नॉट सफरिंग फ्रॉम अ डिजीज और अ फिजिकल काइंड ऑफ एन एलिमेंट. मैं ये मान रहा हूँ कि इन जनरल थिंग्स आर फाइन. नाउ इफ यू वांट टू बी अ कामर ऑन डेली बेसिस, तो एक सबसे बहुत ही रिफॉर्मिंग चीज है, बहुत ही सिंपल. अच्छा, हमें लगता है कि यार सॉल्यूशन, ईशा, आई डोंट नो, बट यू माइट एक्सपेक्ट और एनी अदर पीपल माइट एक्सपेक्ट, यार कुछ ऐसा सॉल्यूशन देना जो कि ऐसा हो कि जो सुना ही ना हो, कॉम्प्लेक्स हो. बट यूजुअली जो सॉल्यूशंस होते हैं वो काफ़ी सिंपल होते हैं. उसके डेप्थ में जाओ तो वो कॉम्प्लेक्स होते हैं, बट इफ यू वांट टू जस्ट सी, दे आर वेरी सिंपल. सो फॉर मी वन वुड बी टू हैव अ गुड नाइट स्लीप. I'm not saying what time you're sleeping. I don't know the routine and all. बहुत ही simple, and we have been working with people. I'll tell you two most common kind of problems working professionals are facing. One is sleep deprivation, sleep quality जो है बहुत ज़्यादा compromise हो रही है. Second is anxiety, and I'm clubbing anxiety and stress here. कि stress को release कैसे करना है वो नहीं आ रहा है. So to answer very objectively, Isha, your question, one if you have to choose only one habit, I would say you should sleep fine. You would say isme kya hai, yeah, maybe I sleep fine. If you sleep fine, then you would find कि you are calmer on a daily basis. Let's say sleep fine कैसे करोगे? For that there is a kind of a sleep routine. बहुत ही quickly इसके बारे में बात कर लेते हैं, just to address that, क्योंकि मैं अभी sleep वाले habit के लिए बात कर रहा हूँ. वो ये रहेगा कि before sleeping you wind up. So there is a connection that we have over all the day. वर्ल्ड के साथ एक कनेक्शन है, फोन के थ्रू जुड़े हुए हैं, ऑफिस गए थे, लोगों से मिले, सब कुछ मिले, ये सारी चीजें. वो एक कनेक्शन का एक बैरियर आना होगा, वो एंड होना होगा. सो इफ यू वांट टू जस्ट गेट इनटू योर ओन स्पेस, यू विल हैव टू हैव दैट सेपरेशन देयर. सो हाउ वुड यू डू दैट सेपरेशन? इज मोबाइल फोन इज डेफिनेटली वन थिंग, इट्स अ वंडर, जो कि हमें एकदम से हमारे पास एक अलग टाइप की दुनिया खोल देता है. करेक्ट. सो वी वुड नीड टू जस्ट लेट्स से सबसे पहले उसे हटाते हैं. नाउ यू माइट से कि मैं फोन is fine with me. So the next important thing would be to have a very comfy space in your bedroom, and have, let's say, जो लाइट हैं वो डिम हो गई हैं, and you are inducing a routine. You're training your mind. ट्रेनिंग माइंड को ट्रेन करने के बहुत डिफरेंट तरीके हैं. मेडिटेशन एक तरीका है, एक्सरसाइज एक तरीका है, योगा एक तरीका है, ब्रीदिंग एक तरीका है. So yeah, I would say this is one habit on which simply what you can do. There is one, you should Google it. I'll also write it, and this is for everyone. अगर आपको बहुत ज़्यादा anxious feel होता है at the end of the day, mind race कर रहा है, समझ नहीं आ रहा है, body भी restless सी हो रखी है after a day's work, do this. विपरीत करनी.
सो विपरीत करनी क्या है, एक सिंपल पोज है, आप अपने बेड पर हो, योर वॉल्स आर ऑन दी सॉरी योर लेग्स आर ऑन दी वॉल एंड योर हिप्स आर टचिंग दी वॉल एंड यू जस्ट लाइंग देयर. Very simple, we're just lying there. What it's effectively doing is it's recirculating the blood that has, जो blood हमारे veins में या हमारी different अलग portions में जमा हो गया है, it through the action of gravity it will help you recirculate it, and that recirculation will help you calm down. Very simple, कुछ नहीं करने को है इसमें. And you should Google this and you'll find it, but it's very easy and very helpful. Second level होता है breathing. You can try out breathing, and what is that breathing is that आप लेटे हुए हो और आपने you just started counting your breathing, nothing else. You're not doing kapalbhati, you're not doing a specific kind of, you're just counting your breath. It will help you calm down, it will help you sleep, because what you're doing again here is दिमाग जो है वो बंदर है, और वो बंदर जो है इधर से उधर भाग रहा है, पूरे दिन भर भागता रहा है, तो उसे अभी भी भागना है, वो क्यों रुकेगा? It will not calm down, so you will have to train it to calm down. So what you will do is, hey, you know what, there is a counting going on 1 to 100, just help me count. And when mind will start counting, it will find it boring, it will sleep, it will be fine. Okay, छोड़ो, ये नहीं करना है. I was looking forward to a Netflix movie, I was looking forward to something else, ये नहीं करना है, and it will just shut down. So yeah, and similarly there are other things. Just watch जो आगे की streams आने वाली हैं. I request everyone to have a look at the next 7 streams that are going to come. These things are going to address. So second wali stream, please, I request everyone, if you like this stream, please attend the second one. And जो second stream है, it is going to be about it's going to be about habits, how to build real में हम live habit tracker बनाएंगे, and we will do it on a page, and we'll make it, and we'll do it through a basis which we were talking about, जो आज हम बात कर रहे थे. So let's see, we'll do this as an experiment. Let's see if it works. And thank you, Srinivas. I'm so thankful that you were here till the end of it. Thank you so much. And if anybody has any questions, I'll take last 2 minutes to have any more questions. And what I'll do is, team, anybody from creator team, is there a way that I can share this resources with the people who attended, apart from the chat? Matlab, can I do it later? I wanted to share this Figma. It's a very basic thing, but if people would want to have a look at it and just recall what they need to search or something, here only, I'll have to see. Okay, let me see if the sharing would be allowed here. So guys, this is the link to the Figma file. I'm just sharing it. I'm not sure if you just want to recall or want to search something else, we'll do it. आज बहुत ही overview था. We'll do this in detail in over upcoming streams. I hope your time was useful, whatever time you spent here. Thank you, Akshay. Thank you so much. Yeah, I look forward to joining you. Okay then, if there are no further questions, I'd like to end this stream by a big thank you and a big shout out to the creator team. Thank you, Tarun, so much for setting up the first stream. I hope this all goes fine. The recording would be available. Please share it with anyone if you think they might get helped, or share any kind of a section that you think might get helped. Thank you, Harsha. And team creator, is it okay if I close the stream? Thank you, Rajat. Yeah, okay then, bye everyone, and see you on Thursday. Please ask your friends or anyone else, any family member. We'll be doing a very exciting exercise right on the stream itself. Chalo, bye, have a good time, happy Dashera, bye.